Hello guys, welcome to Garuda Academy. Fly like an eagle into IT industry. Today's topic is testing principles. आज का टॉपिक है टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो आज हम देखेंगे। इट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इनटू द इंटरव्यूज इफ यू आर ट्राइंग टू गिव अ इंटरव्यूज फॉर सीनियर लेवल और जूनियर लेवल। इट इज़ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन और इट इज़ द मोस्ट important question to be a good tester into the IT industry. Let's start. There are around seven testing principles. These are as follows: defect clustering, pesticide paradox, testing shows presence of defect, early testing, absence of error policy, testing is context dependent, exhaustive testing. We are going to see one by one. Okay. First principle is defect clustering. Defect clustering states that a small number of modules contain the most of the defect detected. Approximately 80% of the defects were found in 20% of the modules. By experience, we can identify such risky modules, but this approach has its own problems. If the same test were repeated over and over again, eventually the same test case will no longer find new bugs. तो अपना जो पहला प्रिंसिपल है वो डिफेक्ट क्लस्टरिंग है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग क्या होता है? तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, अभी सपोज अमेजोन पकड़ लो, एप्लीकेशन अमेजोन का एप्लीकेशन होगा तो उसमें मॉडल्स होगा। पहला मॉडल जो होगा वो लॉगिन का मॉडल होगा, लॉगिन पेज होगा, उसके बाद जो होगा होम पेज होगा, कार्ट मॉडल हो गया, ऐसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो बग्स मिलते हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में मिलते हैं। डिफेक्ट उसे हम डिफेक्ट क्लस्टरिंग बोलते हैं, और जो मॉडल्स में वो हाइड रहते हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पेस्टिसाइड पैराडॉक्स. Testers cannot depend on existing techniques, and they must have to look continually to improve the existing method to make testing more effective. But even if all this hard work in testing, we can never claim our product is bug free. To overcome this, test cases need to be regularly reviewed and revised, and add new and use different test cases to help find more defects. तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स बेसिकली क्या होता है? जो अपने जो एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस होते हैं वो after some time it is not able to identify, or these are not capable to identify the new bugs. That's why we need to improve or modify our existing test cases. We need to use different techniques to identify the new bugs. This is the pesticide paradox. Next principle is testing shows presence of defect. Testing principle states that testing talks about the presence of defects, not about the absence of defects. Software testing reduces the probability of undiscovered defects remaining in the software, but even if no defects are found, it is not a proof of correctness. But if we work hard, take all precautions, and make our software products 99% bug free, the software does not meet the needs and requirements of the client. तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का मीनिंग है, ड्यू टू एंड टेस्टिंग इट शोज द डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर. तो टेस्टिंग करने से हमें जो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स रहते हैं वो मिल जाते हैं. तो अगर कोई एप्लीकेशन 100% बग फ्री है ऐसा बोल रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन यूज में नहीं होगा या वो टेस्ट नहीं किया होगा. तो बेसिकली टेस्टिंग हमें सॉफ्टवेयर के अंदर में जो बग्स रहते हैं वो दिखाता है. Next principle is early testing. Testing should start as soon as possible in the software development lifecycle, so that defects in the requirement or design phase are captured in the early stages. It is cheaper to fix defects in the early stages of testing. We should start finding the bug at the moment the requirements are defined. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में
अलग अलग मॉडल्स यूज़ करते हैं, मॉडल्स यूज़ करते हैं, जैसे आजाइल हो गया, वाटरफॉल हो गया, फ्री मॉडल हो गया। तो उसमें जो टेस्टिंग का अप्रोच होता है, टेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग रहता है। बेसिकली अर्ली टेस्टिंग will shows the shows or helps to identify the bugs, and that identified bugs helps to or saves our times and money. If suppose the development is going on at the end point, and we are not identify the issue from the scratch in scratch time, or in starting time, then it will cost, because we developers develops a code according to that functionality, but after the end of the time we get to know that there was a mistakes, or there were mistake in the code, and due to the bugs is present and we are not identified. Also such bugs is called as a latent defect present into the software from longer time, but identified after later period. And to fix such bug, it takes developer longer time, and also it takes to make changes in whole code, in every module's codes, because developers make a logic around such a code picks. That's why it cost more, because it takes more time, and also it takes more efforts to test the applications. That's why. Next principle is absence of error policy. This can be possible if the software which is 100% bug free is still unusable. The case can be if the system is tested for wrong requirements. Software testing is not finding the defects, but also to check the software addresses the business needs. The absence of error policy, that is finding and fixing defects, does not help if the system build is unusable and doesn't fulfill the user's needs and requirements. तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का मीनिंग है कि एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी, मतलब ऐसा है कि कोई एप्लीकेशन 100% बग फ्री नहीं हो सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि वो एप्लीकेशन 99% बग फ्री है, मतलब वो एप्लीकेशन यूज में नहीं है। जब यूजर वो यूज करना स्टार्ट करेगा तब जाके उसको बग्स मिलेगा। और टेस्टिंग का यही सिर्फ गोल यही नहीं कि वो टेस्ट करके बग्स फाइंड करना है। तो जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है, कौन से टाइप का यूजर वो यूज करने वाला है, उस हिसाब से वो टेस्ट करके बग्स फाइंड करना भी इसका अर्थ है। Next principle is testing is context dependent. Testing is context dependent. That we test an e-commerce site will be different from the way we test the commercial. All the developed softwares are not identical. We will use different methodology, techniques, and type of testing depend on the application type. तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का मीनिंग है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, मतलब जो अपना टेस्टिंग रहता है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड रहता है। मतलब सपोज वी आर टेस्टिंग द ई कॉमर्स एप्लीकेशन, द अप्रोच टू टेस्ट द एप्लीकेशन इज डिफरेंट। इफ यू आर टेस्टिंग अ कैपिटल मार्केट एप्लीकेशन और ट्रेडिंग एप्लीकेशन, द अप्रोच विल बी डिफरेंट। इफ यू आर टेस्टिंग अ इंश्योरेंस एप्लीकेशन, द approach should be different. Or if we are testing a web application, the approach will be different. If we are testing a mobile application, the approach will be different. If you are testing a desktop application, the approach will be different. That's why the testing is context dependent. मतलब जो टेस्ट करना है वो कौन से टाइप का एप्लीकेशन है, उसका बिजनेस क्या है, उसका यूजर क्या है, इस सब पे जो टेस्टिंग करना है उसका अप्रोच चेंज होता रहता है। It's all about the next principle is exhaustive testing. Exhaustive testing is not possible. Instead, we need an optimal amount of testing which is based on the risk assessment of the application. तो exhaustive testing का मतलब है कि कितना जितना भी टेस्टिंग करोगे आपको कुछ ना कुछ bugs मिलते रहेंगे, because in previous principle we seen that absence of error policy, मतलब कोई भी एप्लीकेशन 100% बग फ्री नहीं रहता है। तो कुछ ना कुछ 1% और 0.01% बग तो रहता है। तो इस केस में कैसे करते कि तो हम कितने समय तक टेस्टिंग कर सकते हैं, तो टेस्टिंग का भी प्रोजेक्ट का कुछ बजट रहता है। तो
उतने में हम वो चीज़ें करते हैं, डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया। और ऐसा है कि बग्स तो माइनर बग्स तो रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल ऑप्टिमल अमाउंट तक हम टेस्टिंग करते हैं, और इट इज मेन फंक्शनलिटीज ऑफ वर्किंग वेल। और एनी माइनर bugs are also there, and it will don't harm the business, then we deploy such requirement into the productions. it's all about it's all about the testing principles, and it is a very important concept into the software industry. If you are working as a software engineer, then you should have a knowledge of the all seven principles. And also during testing the application, you have to implement these principles into the working on the application testings. It's all about it. If you like the information, please like, share and subscribe. Thank you.